Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं कैटजिंग से, मिनी कैटजिंग से। चैप्टर 8 आज करेंगे जिसका नाम है कॉलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो आपने मेरी चैप्टर 6 और 7 की वीडियो ऑलरेडी देख रखी है। अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें, क्योंकि चैप्टर 6 में ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर ये डायग्राम आप अच्छे से मास्टर कर लेते हो, यानी चैप्टर 6 की वीडियो पूरी देख लेते हो, तो आपको काफ़ी आसानी होगी पूरा आगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझने में। तो वर्ड कॉलिनो रिसेप्टर अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या है। दीज आर दोज रिसेप्टर्स जिन पर एसिटाइलकोलिन काम करता है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे वो ड्रग्स जो कॉलिनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, यानी एसिटाइलकोलिन के फंक्शन को ब्लॉक करती हैं। चैप्टर 7 हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी कॉलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटर्स की। सो इफ आई टेक यू बैक टू फॉर एग्जांपल द टाइटल ऑफ चैप्टर नंबर 7, एंड आई थिंक इट्स वर्थ having a look one more time because this is just the opposite. Chapter 8 is opposite to chapter 7 and chapter 7 is opposite to chapter 8. इस तरह की चीज है। So देखें इस chapter 7 का टाइटल क्या था? कॉलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटिंग। और अब हम बात कर रहे हैं कॉलिनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स की। तो चैप्टर 8 इज जस्ट अपोजिट टू व्हाटएवर वी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 7। तो इसीलिए ये जरूरी है, मैं कह रहा हूं ना आपसे बार बार कि चैप्टर 6 की मेरी वीडियो देखो ताकि आपको ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी की बेसिक्स पता हो, फिर चैप्टर 7 की वीडियो देखो ताकि आपको कॉलिनो रिसेप्टर एक्टिवेटर्स का पता हो, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगी बात। फार्माकोलॉजी ऐसे ही काम करे। पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, अगला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट द ड्रग्स विच विल ब्लॉक कॉलिनो रिसेप्टर्स। वी विल ऑल्सो talk about drugs which are cholinesterase regenerators. देखो cholinesterase जो है, it is a compound, it is a chemical produced in your body which ultimately metabolizes acetylcholine. यानी जितना ज्यादा cholinesterase होगा acetylcholine उतना कम होगा। और इस चैप्टर में हम वही तमाम चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिससे acetylcholine की एक्टिविटी कम होती है। So if you increase cholinesterase, you decrease acetylcholine. So basically, we are talking about acetylcholine का blockage in this chapter. Okay, the cholinereceptor antagonist. आप cholinereceptor का blocker बोलो या cholinereceptor का antagonist बोलो, एक ही बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे cholinereceptor का activator या cholinereceptor का agonist, एक ही बात थी, ठीक है ना। So cholinereceptor antagonist consist of two subclasses based on which receptor they are working. आपको पता है कि there are two types of receptor for acetylcholine, nicotinic receptor and muscarinic receptor. So the nicotinic receptors and muscarinic, ये M for muscarinic है। So for example on the sweat gland, acetylcholine is working on muscarinic receptor, but on the preganglionic stuff, acetylcholine is working on the nicotinic receptor. ये हम डिटेल में कर चुके हैं, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ चैप्टर 6 पहले देख लो, तो ताकि यहाँ जब मैं तेजी से नाम लूँ ना मस्कुरानिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, तो ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक आपने चैप्टर 6 की मेरी वीडियो देख नहीं रखी है। सो आइदर दे आर एंटी मस्कुरानिक, सो दोज एंटी कोलिनर्जिक। सो देखो ये सारे नाम एक हैं, एंटी कोलिनर्जिक बोलो या कोलिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलो या कोलिनो रिसेप्टर ब्लॉकर बोलो, दे आर ऑल सिनोनिम्स। ओके, सो बिकॉज दे आर ऑल ब्लॉकिंग द जॉब ऑफ एसिटाइलकोलिन। सो एसिटाइलकोलिन या तो मस्कुरानिक रिसेप्टर पे काम करता है या निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करता है। तो अगर वो ब्लॉक कर रहा है मस्कुरानिक रिसेप्टर्स को, दीज आर कॉल्ड एंटी मस्कुरानिक रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। और अगर वो वर्कअप कर रहा है ऑन द निकोटिनिक रिसेप्टर्स, देन दे आर कॉल्ड एंटी निकोटिनिक रिसेप्टर्स। तो ये बात तो बहुत आसान है समझना। And then the next category was cholinesterase regenerator. So by these drugs, what we do is we have increased levels of cholinesterase in the body, which mean decreased levels of acetylcholine. क्योंकि जितना ज़्यादा cholinesterase होगा वो acetylcholine को destroy करेगा. So if we talk about cholinereceptor blockers, anticholinergic effect, there are two categories. Number one is either you block muscarinic receptor or nicotinic receptor, and number two is you build up cholinesterase in the body. Okay, so these drugs are pharmacologically antagonist और इनवर्स एगोनिस्ट, एक ही मतलब है। दिस इज ऑल द सेम मीनिंग, एंटागोनिस्ट बोलो इनवर्स एगोनिस्ट। अब ये एगोनिस्ट सुन के बच्चे परेशान होते हैं कि शायद इसका जो काम है वो सेम है एसिटाइलकोलिन जैसा। नहीं, यहाँ वर्ड है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट मतलब मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल विद लॉन्ग हेयर्स और इसका नाम है से फॉर एग्जांपल एनी प्रिया फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूं कि प्रिया लड़का नहीं है। तो अब आप प्रिया लड़का सुन के समझ रहे हैं कि प्रिया लड़का, आगे मैं नहीं भी तो कह रहा हूं। सो प्रिया लड़का नहीं है, बिल्कुल इसी तरह ये इनवर्स एगोनिस्ट है। ओके, दे आर नॉट एगोनिस्ट।
A third special group is the cholinesterase regenerators, which are not actually receptor blockers, but they rather chemical antagonist of the organophosphate acetylcholinesterase inhibitors. So that is basically the theory कि if you have more cholinesterase, you have less acetylcholine. और फिर इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं. मस्कुरानिक रिसेप्टर्स की कई कैटेगरीज थी, आपको मैंने लास्ट वीडियोस में पढ़ाई हैं, M1, M2, M3, M4, M5. We have some drugs which are only active on M1 receptor. So M1 selective, example is pyrazipine. There are some drugs in the market available which are M3 selective only, called darifenacin, and some of them are just non-specific. So they block all the muscarinic receptor, any one of them, M1 to M5, non-selectively. ऐसा नहीं है वो selectively M1 पे bind करेंगे या 2 पे. They bind anywhere basically. Such blockers are called non-selective. Example is atropine. And if you talk about anti-nicotinic, so nicotine receptor is present on the sympathetic ganglions, also on the parasympathetic ganglion. So that's a parasympathetic ganglion. Here we also have nicotinic receptor. So these are ganglionic blockers. Example is hexamethonium. Another very good example of nicotinic receptor जहाँ acetylcholine काम करता है is the somatic muscles. So neuromuscular blockers. Example is tuberculin and cholinesterase regenerators. Example, the prototype is pralidoxime. So remember these names. You have to remember. But I gave you the basic concept कि acetylcholine का action block करने के लिए दो तरीकेकार हैं. Number one, you use the acetylcholine blockers, and number two, you use the cholinesterase regenerators. Blockers दो तरह के हैं. They are either muscarinic blockers or they are nicotinic blockers. Okay? अब इस पे पूरा ये डिस्कशन अगर पूरे चैप्टर का बेस करेगा, चैप्टर 6 की वीडियो जरूर देखो, चैप्टर 7 की वीडियो जरूर देखो. बिकॉज देखो चैप्टर 6 में मैंने बताया कि निकोटिनिक और मस्कुरानिक रिसेप्टर्स हैं किधर किधर, एसिटाइलकोलिन कहाँ कहाँ काम करता है और एसिटाइलकोलिन क्या काम करता है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है. सो फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट, आपको पता है कि इस चार्ट में हर मस्कुरानिक रिसेप्टर की सब टाइप के डिफरेंट फंक्शंस बताए हुए हैं. एंड देन वी हैव डन दिस चैप्टर इन ग्रेट डिटेल कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के इफेक्ट्स क्या हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे. ऑब्वियसली मैं ये बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इसीलिए कह रहा हूं चैप्टर 6 की वीडियो देख के इस तरफ आओ, ठीक है. बाकी फिर ये चैप्टर पढ़ना ना आपके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक अगर आपने वो समझा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट. सो नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, सो वी हैव टू इन प्रैक्टिकली वी हैव टू टॉक अबाउट एंटी-मस्कुरानिक ड्रग्स, एंटी-निकोटिनिक ड्रग्स एंड देन cholinesterase regenerators. So first of all, let's start our discussion by talking about muscarinic antagonist या anti-muscarinic, एक ही बात है. Classification: muscarinic antagonists can be divided according to their specificity for M receptors. Some of them are M1, M3 specific, some of them are non-specific. जैसे अभी ऊपर चार्ट में मैंने आपको दिखाया भी था. Okay? Now, although the division of the muscarinic receptor into group is documented in chapter 6, देखो मेरी तरह ये भी कह रहा है कि chapter 6 और 7 पहले देख के आओ. Only two distinctly receptor-selective M1 antagonists have reached the clinical trials, which are pyrazipine and telanzapine, neither of which is used in the United States. So, the मजे की बात है. However, as noted later, a few agents in use in United States are somewhat selective for M3. But in पे clinical trials नहीं हुई हैं, so people are still using it without clinical trials. Most of the anti-muscarinic drugs in use are relatively non-selective, जैसे atropine है. The muscarinic blockers can also be subdivided on the basis of their primary clinical target, such as the central nervous system or the eye or the bronchus or the GI, because acetylcholine इन तमाम जगहों पे काम करता है. So if you look at acetylcholine, muscarinic receptor, it goes to the sympathetic supply in sweat gland. Acetylcholine goes to the muscles. Acetylcholine goes to a lot of different organs of your body. So you see the cardiac muscle, the smooth muscle, the glands, the nerve terminals, सब जगहों पे ये मस्कुरानिक रिसेप्टर है. तो अगर आप एंटी मस्कुरानिक यूज करेंगे तो ये सारे एक्शंस ब्लॉक होंगे ना जहां जहां मस्कुरानिक रिसेप्टर्स हैं. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, इसीलिए चैप्टर 6 इंपॉर्टेंट है. Drugs used for their effects on the CNS or eye must be sufficiently lipid soluble so that they enter the CNS. और चूंकि eye भी basically drive हुआ है from the central nervous system, उसके इर्द गिर्द भी 3 layers हैं. There is the sclera, choroid and retina. So the drug has to be lipid soluble in order to get to the central nervous system and the eye, ताकि वो blood brain barrier को basically cross कर सके. A major determinant of this property is the presence or absence of a permanently charged amine group in the drug molecule, because charged molecules are less lipid soluble. So that's the general pharmacology thing that you should know. Atropine is a non-selective muscarinic blocker. It is derived basically from a plant called Atropobelladonna. और भी बहुत सारे plants में atropine extract होता है.
Because it is a tertiary amine, atropine is relatively lipid soluble and readily crosses the membrane barrier. यानी CNS और eye तक easily पहुंच जाएगा. And इसकी half life है about 2 hours and duration of action for the normal dose is not high dose is about 4 to 8 hours. यानी after a few half lives except in the eye. अभी हम table देखते हैं. In ophthalmology, topical activity and duration of action are important in determining the usefulness of the several antimuscarinic. ये ophthalmology में बहुत ज़्यादा use करते हैं atropine particularly. अभी बताता हूँ. कई सारे procedures में use होता है. Similar ability to cross the lipid barrier is essential for agents used in Parkinsonism because there the target is to enter into the central nervous system. In contrast, the drugs used for their anti-secretory or anti-spastic activity on the gut, bladder, bronchi are often selected for minimum CS activity. So these are the drugs which are selected जिनकी limited penetration हो into the CNS. Point ये है कि you need to know the drug solubility. So if a drug is very much lipid soluble, it will obviously enter into CNS. If the drug is not lipid soluble, it will not enter into CNS. That's the bottom line. तो अगर आपको gut पे activity चाहिए मस्कुरानिक ब्लॉकर की या कहीं और स्वेट ग्लैंड्स पे चाहिए फॉर एग्जांपल और आप सीएनएस को स्पेयर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू यूज अ ड्रग जिसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम हो ताकि सिर्फ पेरिफेरल एक्शन हो, सेंट्रल एक्शन कोई ना हो. That's an important table which discusses some important terms. Anticholinergic का मतलब है any drug that blocks the muscarinic as well as nicotinic receptor. Because word cholinergic का मतलब है वो चीज़ें जो एसिटाइल कोलिन से रिलेटेड है. अब एसिटाइल कोलिन muscarinic receptor पे भी काम करता है और एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक receptor पे भी काम करता है. So एसिटाइल कोलिन anticholinergic means both of them. Okay. Then anti-muscarinic specifically for muscarinic receptor. यहाँ निकोटिनिक receptors block नहीं होंगे. इसी तरह अगर कहीं एंटी निकोटिनिक वर्ड आएगा सो दैट वुड बेसिकली मीन कि सिर्फ और सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक होंगे और मस्कुरानिक नहीं होंगे. ठीक है. एट्रोपिन फीवर इज बेसिकली हाइपरथर्मिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूस्ड बाय एंटी मस्कुरानिक ड्रग. बेसिकली क्या होगा, आप एंटाई देखें, ये अगर आपको टेबल समझा हुआ है ना आपने, स्वेट ग्लैंड में मस्कुरानिक रिसेप्टर, आप इसको अगर ब्लॉक कर देंगे सो द स्वेटिंग प्रोसेस विल बी डिस्टर्ब्ड एंड यू विल स्वेट ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सो दैट विल ऑल बी डिस्टर्ब्ड. और अगर वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो द बॉडी टेम्परेचर विल रेज, देयर विल बी इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड atropine flush. Now, marked cutaneous vasodilation of the arm and upper torso and head by the toxic doses of anti-muscarinic drugs, especially atropine. इसका exact mechanism पता नहीं है, but probably it is also associated with the supply of sweat glands. Cholinesterase regenerators are the drugs which regenerate cholinesterase, and इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो acetylcholine की एक्टिविटी कम होगी. Okay. Cycloplegia is a terminology which is equivalent to paralysis of accommodation, which means कि जब आप नज़दीक की चीज़ देखेंगे तो आपका लेंस इस तरह से फोकस नहीं करेगा. So this is inability to focus on close subjects. Depolarizing blockade means flaccid skeletal muscle paralysis caused by persistent depolarization of neuromuscular end plate. So अगर इस end plate पर persistent depolarization हो रही है, activity हो रही है, it goes crazy after some time and there is a blockage of depolarization. Muscle activity stop हो जाती है, so muscle goes into flaccid paralysis. Myotic, so this one was cycloplegia, समझ में आ गया, फोकस नहीं कर सकते. Myotic means a drug that constricts the pupil. So if pupil is constricted, that is known as miosis. Mydriatic is if a drug is dilating the pupil, the drug is known as mydriatic drug. ये दो terms हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, particularly जब acetylcholine और autonomic nervous system की बात करते हैं कि which drugs are myotic, which drugs are mydriatic. Again, refer to this chapter number 6, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि हमारे ciliary muscles पे, iris के muscles पे parasympathetic supply का क्या इफेक्ट है. Okay. Then the non-depolarizing blockade. Depolarizing blockade का मतलब था कि there is more and more acetylcholine activity, जिसकी वजह से muscle paralysis में चला गया. Depolarizing में is also muscle paralysis, but यहाँ पे blockage है by the nicotinic receptor and prevention of the depolarization. So अगर आप इसको block कर, so here is the concept. If the neuromuscular junction is working super duper and there is a lot of acetylcholine firing
देन व्हाट विल हैपन कि ये जो एंड प्लेट है ये एग्जॉस्ट हो जाएगी एंड द मसल विल गो इनटू पैरालिसिस। अब ये जो पैरालिसिस है ये ओवर डीपोलराइजेशन की वजह से हो रही है, लेकिन अगर आप डीपोलराइजेशन को रोक ही दें, सो यू काइंड ऑफ ब्लॉक द निकोटिन रिसेप्टर हियर, अब भी ये मसल पैरालिसिस में जाएगा, बट दिस इज नोन एज depolarization paralysis, okay? या not the depolarization, but ये non-depolarizing paralysis. So ये दो paralysis अलग अलग हैं जिनके easy हैं concept समझना. If we are talking about depolarizing blockade, तो इसमें blockade हो रहा है of the muscle activity because of rapid depolarization, and non-depolarization में आप nicotinic receptor block कर रहे हैं, okay? Now parasympatholytic and parasympathoplegic, a drug that reduces the effect of parasympathetic nerve stimulation, usually by blockage of muscarinic receptor of autonomic system, is called parasympatholytic. यानी आपने basically parasympathetic system का काम तोड़ दिया है. These drugs are called either parasympatholytic or parasympathoplegic. Okay, so far so good, making all sense. Now let's talk about the mechanism of action of what? Of anti-muscarinic drugs. Simple mechanism of action hai, they block the muscarinic receptors. Now you need to know wherever in the body the muscarinic receptors are present, they will be blocked. Okay, and effects क्या होंगे? Effects उल्टे होंगे. उल्टे से मतलब है जो भी muscarinic receptor पे काम हो रहा था अब वो नहीं होगा. Simple. So आपको ये पता होना चाहिए कि काम हो क्या रहा था, और ये यहाँ पे फिर डिटेल्स लिखी हुई हैं कि इफ़ यू यूज़ मस्कुरानिक ब्लॉकिंग ड्रग तो सीएनएस पर क्या होगा? द इफेक्ट विल बी नींद आएगी, एंटी मोशन सिकनेस. एक्चुअली एंटी मोशन सिकनेस में ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, मोशन सिकनेस में ये ड्रग यूज़ करते हैं टू ब्रिंग द एंटी मोशन इफेक्ट्स. देन एंटी पार्किंसन एक्शन, एमनीजिया, डिलीरियम, ये सारे इफेक्ट्स हैं ऑफ द मस्कुरानिक ब्लॉकिंग ड्रग्स ऑन सीएनएस. आई पर क्या इफेक्ट है? साइक्लोप्लेजिया एंड मिड्रियासिस. अब मैं ये नहीं समझाने लगा बिकॉज यहाँ से आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मिड्रियासिस, व्हाट इज साइक्लोप्लेजिया. साइक्लोप्लेजिया मीन्स यू कैन नॉट फोकस ऑन द नियर सब्जेक्ट. मिड्रियासिस मीन्स दीज ड्रग्स विल बेसिकली डायलेट द प्यूपिल. सो pupil dilate हो जाएगा, there will be big pupil and there will be inability to focus on the near subjects. So that's sort of the thing जो हर चीज़ पहले डिस्कशन से कोरिलेटेड है. So आगे की बात समझ में आएगी जब पिछली बात समझी होगी. ब्रोंकोस्पेन ड्रग्स का क्या इफेक्ट है? ब्रोंकोडाइलेशन, and therefore they are used in, say for example, asthma. GI tract में relaxation of the muscles, slow peristalsis and reduced salivation. So it's kind of making the GI tract dry. Genitourinary, relaxation of the bladder, urinary retention. You won't pee out, you will keep the urine in your bladder. Heart में initially it causes bradycardia, but then later on tachycardia, which is the final effect. Blood vessels पर, क्योंकि ये muscarinic receptor है ना, blood vessels पे भी जा रहे हैं, so these muscarinic receptors are distributed. ये भाई की diagram है. So blood vessels पे block of the muscarinic vasodilation, not manifest unless a muscarinic agonist is present. ये भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा convoluted phenomena है ये. And glands पर marked reduction of salivation, lacrimation and gastric secretion. So they are kind of reducing the secretions from the glands and these are the receptors responsible. Skeletal muscle पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता because skeletal muscle पे nicotinic receptor है. हम बात कर रहे हैं muscarinic blockage की. तो ये इफेक्ट सारे समझ में आ गए. All these are written here. You can read them कि CNS पे क्या इफेक्ट है, आई पे क्या इफेक्ट है. That all is extremely important. क्लिनिकल यूजेस, आप यहाँ इनको देख के आइडिया लगा सकते हो कि इसके क्लिनिकल यूजेस एक्चुअली क्या होंगे. सो फॉर एग्जांपल अगर किसी को मोशन सिकनेस है तो ये यूज़ किए जा सकते हैं. अगर किसी का कोई आई प्रोसीजर है जिसमें मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया रिक्वायर्ड है तो ये यूज़ किए जा सकते हैं. अगर किसी की जीआई ट्रैक्ट की पेरिस्टाल्सिस को कम करना है, भाई डायरिया शायरिया हो रहा है, उसको कम करना है, ये यूज़ किए जा सकते हैं. अगर फॉर एग्जांपल व्हाट एल्स, अस्थमा, ब्रोंकाई की आपको सिक्रीशंस कम करनी है, डायलेट करना है. सो दीज आर ऑल द क्लिनिकल यूजेस. ओके, नाउ अब सेपरेटली इन्होंने ऑर्गन दिया है, कौन सी ड्रग प्रेफरेबल है उसके बारे में जिक्र किया है और उसके इफेक्ट्स बताएं. सो स्कोपोलामीन इज स्टैंडर्ड थेरेपी फॉर मोशन सिकनेस. ऑब्वियसली दिस विल बी हाईली लिपिड सॉल्युबल ताकि ये ब्रेन तक एंटर हो, ठीक है ना. अदरवाइज बेंस्ट्रोपीन और बापेरिडीन और ट्राइहेक्साफेनिडिल आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेवरल एंटीमस्कुरानिक्स आल्सो यूज्ड इन पार्किंसन. सो सीएनएस में ये दो मेजर यूजेस हैं एंटी-मस्कुरानिक्स के, मोशन सिकनेस एंड पार्किंसन. Okay. Eyes में antimuscarinic drugs are used to cause mydriasis, as indicated by the name belladonna, beautiful lady. Wow, atropa belladonna, atropine.
Now, they also cause cycloplegia and prevent accommodation. In descending order of duration of action, these drugs are atropine 72 hours. तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है बेसिकली? So सबसे ज़्यादा तो लग रहा है कि टाइम यही लगा रहा है एट्रोपिन. आज डालें 72 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहेगा. एक्चुअली बड़ा यार जुल्म है ये. ब्रोंकाई में they are used, for example, in COPD, asthma. जहाँ जहाँ आपको bronchodilation करना होगा, you can use these drugs. Ipratropium is, for example, a drug that is used. Tiotropium, alisadinium. These are all the new drugs coming up, okay? And they are long-acting antimuscarinics, and which are now being practiced in diseases such as COPD. Gut mein, these are the drugs that you use, and they reduce the secretion and peristalsis of the gut, okay? And bladder में these are the drugs that you use. Actions हमने पढ़ लिए हैं. And इनकी intoxication, obviously जो भी इनका effect है, whatever they are causing as their effect, अगर high dose use करेंगे वो effect बहुत ज़्यादा हो जाएगा. So for example, if you are using too much of atropine, तो gut पे उसका effect ये होगा कि secretions बिल्कुल कम होंगी. So हम usually atropine toxicity के लिए ये mnemonic use करते हैं: dry as bone, hot as pistol, red as beet, and mad as hatter. So ये सारे effects हैं. Dry because सारी secretions कम हो जाएंगी. Hot because sweat glands की जो regulation है वो disturb हो जाएगी. So all these effects are toxic effects of atropine. Okay. Predictable toxicities. Antimuscarinic actions lead to several important and potentially dangerous effects. Blockade of thermoregulatory sweating increases the temperature, hot as pistol. There is decreased secretion of the glandular secretions, basically, to dry as bone. So these are all predicted. Other toxicities, if it enters into CNS, then the person goes mad, delirium and hallucinations. These are the common side effects of these drugs. So that will be obviously seen with the drugs which are more lipid soluble. So if you have to treat, for example, respiratory issues, you select a drug which is less lipid soluble, so that there are less chances of it entering into the CNS. So if you are using a drug which has to work on gut, for example, you choose a drug which is less lipid soluble. ठीक है? अच्छा, treatment of toxicities. Treatment of toxicity is usually symptomatic. Severe tachycardia may require cautious administration of small doses of even physostigmine. You tell me what is this? हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में. Sometimes you have to reduce the drug of the antimuscarinic to counter the effects of their high doses. Contraindications should be used cautiously in infants because of the danger of hyperthermia. Sweat gland regulation problem. Hyperthermia may be a problem particularly in kids. The drugs are relatively contraindicated in persons with glaucoma. क्योंकि already अगर किसी को glaucoma है and the drug is causing cycloplegia and mydriasis, that can aggravate glaucoma. Okay, especially the closed angle form in men with prostatic hyperplasia. Maybe you don't use these drugs. Okay, now so that was one class. And actually, you tell me what is the reason why don't we use them in prostatic hyperplasia? So write down in the comment section. Let me see आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, सही सोच रहे हैं या नहीं. Now that was one category. So antimuscarinics. Now we have to talk about anti-nicotinic drugs. Okay, so the next topic should be nicotinic antagonists. Now for that to understand, you need to know nicotinic receptors किधर हैं. Nicotinic receptor, for example, on the neuromuscular junctions हैं. Nicotinic receptors, for example, adrenal medulla में हैं. Nicotinic receptor, for example, in the pre-ganglionic और post-ganglionic जो synapse हो रहा है, sympathetic chain ganglia में यहाँ. So जहाँ जहाँ nicotinic receptor हैं, वहाँ blockage होगी. So let's talk about the effects of anti-nicotinics now. So nicotinic receptors किधर होते हैं? Again, refer to this diagram. You have nicotinic receptors in the ganglion of the sympathetic chain, basically. Paravertebral sympathetic chain देखें यहाँ nicotinic receptors. ठीक है? इसके अलावा nicotinic receptors कहाँ हैं? Neuromuscular junction पे. So and also in the adrenal medulla. So जितने भी effects आपको याद रखने होंगे निकोटिनिक रिसेप्टर के, वो इस तरह याद होंगे कि उनकी लोकेशन किधर है. और इसी तरह ब्लॉकर्स के इफेक्ट, यानी जो भी फंक्शन इस निकोटिनिक रिसेप्टर का यहाँ सिंपैथेटिक चेन में है, अगर आप उसको ब्लॉक कर दें तो वो फंक्शन नहीं होगा. सो यू नीड टू डेफिनेटली वॉच वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 6. तो ganglion blocking drugs, because nicotinic receptor is present in the ganglia. Blockers of the ganglionic nicotinic receptor act like competitive pharmacologic antagonists. So they block the action of acetylcholine on the nicotinic receptors. Although there is evidence that some also block the pore of the nicotinic channel itself. Irrelevant discussion.
These drugs were the first successful agents for the treatment of hypertension. किसी वक्त में यूज किए जाते थे क्योंकि ये सिंपैथेटिक चेन को ब्लॉक करेंगे ना, जब सिंपैथेटिक चेन पूरी ब्लॉक होगी तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, बट नाउ दे आर नो मोर यूज, ओके, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज. Hexamethonium, mecamylamine and several other ganglion blockers were extensively used for the disease as well. Unfortunately, the adverse effects of ganglion blockade in hypertension are so severe that the patients were then unable to tolerate them for very very long term period. अब आप सोचें ना कि अगर आप बाकायदा गैंग्लियन ही को ब्लॉक कर दें, ये पूरा गैंग्लियन ब्लॉक हो जाए, सो इसका एक आउटकम ये हो सकता है कि देयर इज रिड्यूस हाइपरटेंशन बाय द ब्लॉकेज, लेकिन और भी तो इफेक्ट्स होंगे. आप बेसिकली पूरा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ना उसको शट डाउन कर रहे हो, और अगर पूरे सिंपैथेटिक सिस्टम को शट डाउन करोगे यू गेट सीवियर इफेक्ट्स. गैंग्लियन ब्लॉकर के इफेक्ट्स देखें सीएनएस पर क्या है. देयर विल बी एंटी निकोटिनिक एक्शन, में इंक्लूड रिडक्शन ऑफ निकोटिन क्रेविंग, एमिलियरेशन ऑफ टॉरेट सिंड्रोम. मैकेलामीन से ये इफेक्ट्स होते हैं. आई पर माइड्रेसिस एंड साइक्लोपेनिक, ये सारे इफेक्ट्स जो यहाँ लिखे हैं. ब्रोंकाई में एस्थमेटिक पेशेंट में नोट सम ब्रोंकोडाइलेशन because you are actually blocking acetylcholine na, lekin it is a minor effect on bronchi. GI tract mein reduction of the motility, genitourinary tract mein, so these are all basically the effects when you use ganglion blockers. अच्छा, ये मुझे जरा सोच के बताएं, स्केलेटल मसल में लिखा है नो इफेक्ट, क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग गैंग्लियन ब्लॉकर. अगर आप डायग्राम देखें तो स्केलेटल मसल की इनर्वेशन में गैंग्लियन बीच में आया ही नहीं. दिस इज अ मोटर इनर्वेशन, दैट्स अ मोटर फाइबर गोइंग डायरेक्टली टू द मसल. वेयर इज द गैंग्लिया? नो गैंग्लिया. द गैंग्लिया इज प्रेजेंट ओनली इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो इन द मसल इनर्वेशन वी आर बेसिकली नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट मोटर इनर्वेशन. तो हम निकोटिनिक ब्लॉकेज नहीं कर रहे, गैंग्लियन ब्लॉकेज कर रहे हैं. तो ये सारे इफेक्ट्स, ओके, दे शुड मेक सेंस बिकॉज इफ यू नो this diagram, all this should make sense to you. Then, so बात क्या रही, मुद्दा क्या रहा? मुद्दा ये रहा कि गैंग्लियन ब्लॉकर किसी जमाने में यूज करते थे for treatment of hypertension. We don't use them anymore because of the side effects, and also we have newer, more advanced, much better drugs now. Okay, trimethophan was the ganglion blocker most recently used in the clinical practice, but it too has almost been abandoned. अगेन बिकॉज इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड साइड इफेक्ट्स हैं, तो अब ये यूज़ नहीं करते. इट इज़ पुअरली लिपिड सॉल्युबल इनएक्टिव. यार ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ये यूज़ ही नहीं करते हैं. Recent interest has focused on nicotinic receptors rather than ganglion blockers. Okay, so you try to block nicotine receptors in the CNS and their relation to the nicotine addiction to Tourette syndrome. Paradoxically, ये हम discuss करेंगे when we do the pathology. Paradoxically, nicotine, varenicline, which is a partial agonist given by mouth, and mecamylamine, a nicotinic ganglion blocker that enters the CNS, have all been shown to have some benefit in smoking cessation. So basically, nicotinic receptor, आप nicotine addiction से बचने के लिए ये drugs use करते हैं, which kind of block nicotine, and they are used for smoking cessation particularly. Because ganglion blockers interrupt sympathetic control of venous tone, they cause marked venous pooling. Obviously, postural hypotension may be a problem. Other toxicities of ganglion blockers may be dry mouth because of decreased salivation, blurred vision because of their effects on the eye, constipation because of reduced motility of GI tract, and severe sexual. So, yaar, ye serious issues hain which are actually noticed in the event of use of ganglion blockers. So, ganglion blockers are not very favorite drugs these days, okay, because of their side effects. Then there are neuromuscular blockers because nicotinic receptor is also present on the neuromuscular junction. So on the neuromuscular blocker, these drugs causes relaxation. And this is therefore important during mechanical ventilation of a patient and surgery. Anesthesia में use करते हैं यार इनको, neuromuscular junction blockers को. Then the last category, chapter का start याद है आपको? In the beginning of the chapter we talked about there are anti-muscarinic, anti-nicotinic, जिसमें ganglion blocker थे जो अब almost use नहीं करते, and then neuromuscular junction blockers जो कि anesthesia में use करते हैं. Now the last category is the cholinesterase regenerators, और इसकी जो prototype drug है that is pralidoxim. It is the prototype cholinesterase regenerator. The chemical antagonists contain an oxime group, not important for you to remember, which has an extremely high affinity for phosphorus atom in the organophosphate insecticides. Because the affinity of the oxime group for the phosphorus exceeds the affinity of the enzyme active site for the phosphorus, these agents are
able to bind the inhibitor and displace the enzyme if aging has not occurred. The active enzyme thus use is regenerated. अब सारी कहानी बहरहाल ये है, मैकेनिज्म को पूछता भी नहीं एग्जाम में. बहरहाल अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, समझते हैं कि किस तरह ये एंजाइम ग्रुप फॉस्फोरस के साथ बाइंड करके अल्टीमेट आउटपुट ये है कि जो कोलिनेस्टरेज है वो रीजेनरेट होता है. So when it is regenerated, cholinesterase, then the activity of the acetylcholine is down. The active enzyme is thus regenerated, paralloxim. The oxime currently available in the United States is used to treat patients exposed to high doses of organophosphate acetylcholinesterase inhibitor insecticide. So that's the use for this particular drug, such as parathion. So people also use it for suicidal attacks, for example. It is not recommended for use in carbamate ACE inhibitor, not ACE, acetylcholinesterase inhibitor overdose. So if it's not recommended, we don't remember it. We remember the organophosphate poisoning, which is actually quite common. So with this, the chapter is over. आपसे मुलाकात होगी अगले ANS की वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा.